me a moment, I'm recording this. So those who have missed it. So I'm recording this for those who have missed it. So as a full-time trader and Zerodha 60 days challenge winner, I thought after starting my journey since 2007, 2008, so those are 7-8 में मैंने trading का अपना कामकाज शुरू किया and started as an investor. पहले तो investor शुरू किया जैसे सब लोग करते हैं. Then I opened my first demat account somewhere in 2009 investment के लिए और gradually scaled up till 2014 और 2014-15 में मैंने started in F&O में काम शुरू किया और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टेक्निकली जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक जानकारी लेना किसी चीज की. आई स्टार्टेड लर्निंग इन 2011. सो आई वाज अ मैच्योर इन्वेस्टर अंटिल देन. एक सिर्फ जैसे कहते हैं ना इन्वेस्टर करके देखते हैं टाइप्स, वैसे काम है. एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग F&O. तो ट्रेडिंग मैंने 16 में शुरू किया बट लर्निंग और छोटे मोटे ट्रेड जो होते हैं वैसे करना 2014 में शुरू किया था. So I became full-time trader last year 2022 January and I have now almost 1.5 years experience as a full-timer. Or investment and trading is my passion and my love also. So I like trading, I like F&O and I like every sort of trading. And my startup of Seychelles Scalpers got activated last year April. Okay, so we have completed 1 year almost here in this month for my startup. And I am a diversified investor. So I believe in asset classes like stocks, debt funds, mutual funds, gold, property, ETFs and MFs and crypto also. So I keep trading here or I keep investing in these asset classes. I'm not a strong believer in fixed deposit, bank fixed deposit. So let me tell you that rather investing in bank fixed deposits or keeping my money in savings account, I will keep that somewhere else which will give me better returns. Okay, so that's about me. And what we do as Seychelles option scalpers and what we offer. So हमारे Seychelles option scalpers में we offer courses also. I have recently started it because my students forced me to do this. They requested me that I should get into this because I have 17-18 years of trading experience and training also. So I am fortunate कि मैं L&D में ही था, learning and development. So training again is in my DNA. So I started this training journey also recently. So मैं क्या करता हूँ? So we offer this trading for living. जिनको full time trader बनना है, उनके लिए we have a special course trading for living. Then those who are interested in swing trading, कि हमें full time trader तो बनना है, but I don't want to see in front of screen every time. So 6-8 घंटा मुझे screen के सामने नहीं बैठना है. So for them we offer swing trading pro as a professional. And then who are interested in becoming intraday trader, so we have a specially intraday trading program for them. And then who are specially interested only in F&O, future and options में trading करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से कोर्स है. और ये सब में नहीं कब पढ़ना चाहते, जो चाहते हैं कि I will keep on continuing my own job or my business, but I want additional source of income, and investing and investment is the biggest source of income and a tool for long-term wealth creation. तो investment कैसे करना है, keeping your own business, profession और job intact, इसका भी हम लोग अलग से एक कोर्स प्रोग्राम हमारा है. So ये कोर्स किसके लिए है? सारे कोर्सेज जो है, कोई भी है जो स्टूडेंट है आफ्टर 10th ऑफ कोर्स, या फिर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, मेल और फीमेल, कोई भी है, रिटायर्ड प्रोफेशनल, ऑल्सो फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर, वोकेशनल प्रोफेशनल है, उनके लिए भी ये करवाते हैं. उनको रेडी है ये अवेलेबल कोर्स. और उसके बाद आप जानते हो ट्रेडिंग क्या है, कि आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो. फ्रीडम ऑफ वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप कहीं से भी अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो यू कैन स्टार्ट योर trading as a business or investment as a business. So I told you about myself and this is my website seychellescalpers.in. इसमें आप जा सकते हैं. This is my website number and we are based in Pune. So I have my office over here in a commercial complex. So anytime if you are dropping in Pune, you can reach out here and I will be happy to see you. So this is my website. Want to learn more? So if you go to seychellesoptionscalpers.in, उसमें ट्रेडिंग में
if you want to just and see my charts and analysis, जहाँ पे एक trading option है website में मेरे, you can go to charts and analysis and that will take you to my daily or weekly stock analysis, and I keep sharing different video nuggets also on this, so you will learn more about it. Okay, so these are courses that I shared. You can register on my website directly if you are interested, and one of us will get back to you and we can start this. These are our social media handles. YouTube पे भी हम लोग available हैं. You can search Saishayu space scalpers, or on Facebook also. You already know, you are joined in through Facebook. And this is for basics. One ये मैंने link share की थी. So for India, हम लोगों को ये सबसे पता नहीं होता जनरली कि are we somewhere in the world as a stock market, ठीक है? So सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो यूएस की है, right? So largest and biggest developed economy in the world is United States. That is called as the mother of all economies, ठीक है? ये मैंने एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर की थी. This is the link. But you'll be surprised to see, अगर आप ये गूगल पे सर्च करते हो biggest derivative market in the world, Google will return you this National Stock Exchange of India. Yes, it is NSE, National Stock Exchange of India. We are largest derivative market in the world. Yes, so we are proud to be Indian कि हम दुनिया में सबसे बड़े डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना. सो दुनिया के सारे जो मल्टी मिलेनियर्स हैं, investment firms हैं, FII, DII, they are excited to invest in India because we are the upcoming, और जितने upcoming economies, जितने भी रिसेशंस आए हिस्ट्री में पिछले 25 साल में, ठीक है, उसमें से हर बार इंडिया पहली बार उभर के खड़ा हुआ है. सो इंडिया एज अ कंट्री इज नोन एज रिसेशन प्रूफ कंट्री, okay, because we have largest percentage and largest share of youths who are working in for economy to develop our economy. So they are also a customers. So we are a biggest market and biggest economy in terms of population and purchasing power. These are few career options if you want to know कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. As a stock market, tomorrow is calling. This is for our kids also. अगर हम अपने बच्चों को career option देना चाहते हैं या फिर खुद ही ऐसा कोई career option change के लिए ढूंढ रहे हैं. Normally क्या होता है, after 35 and 40 years of your age, you want to do something different. जो हम लोगों ने 10-15 साल किया हुआ है ना, so kind of एक saturation आ जाता है life में and you want to have a change, ठीक है? So you can look out for these options and opportunities. जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप जाते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप कर सकते हो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक विंग है, एक एरिया है, एक फंक्शन है आई वुड से, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हो. यू कैन और योर किड्स कैन एक्सप्लोर दिस करियर ऑप्शन आफ्टर 10th और 12th और ग्रेजुएशन के बाद भी, बट दे कैन स्टार्ट लर्निंग दिस अलॉन्ग विद देयर ओन करियर, ओन एजुकेशन. जो भी कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उसके साथ they can start learning this for investment purpose. After becoming a graduate, they can explore, or you can also become and explore this technical analyst option or market research analyst or equity analyst option. So आप इसमें अपना एक ढूंढ सकते हो ओपन एरिया टेक्निकल एनालिसिस, जो स्टॉक्स को टेक्निकली एनालाइज करते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं बाय और सेल के. Then you can also look forward as a fundamental analyst, जो कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं. If you are a commerce graduate or MBA, you can explore this option. I have many students with me who are doing both of this. They are MBAs and they are science and technical graduates also. They are software engineers with me who are learning in our company courses, जिसमें they are doing both and they are enjoying it because it's a different area for them and it's full of excitements and opportunities. तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो कंपनी के बैलेंस शीट्स, रिपोर्ट्स, इसमें एनालिसिस करते हैं, या फिर स्ट्रेटेजी डेवलपर का आप काम कर सकते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है. यू कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजी एंड यू कैन गिव इट फॉर कोडिंग. तो जो एल्गो या डेवलपर है, कोडर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, वो उसको कोड करके एग्जीक्यूट करते हैं. ये एक एरिया हो गया R&D का. The other option is operation and execution.
तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बिकम अ फुल टाइम और प्रोफेशनल ट्रेडर. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन around the world and India now emerging who are offering a job as a trader. तो आपको करना क्या है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव एन इंपॉर्टेंट कॉल, गिव मी अ मोमेंट, टेक दैट कॉल. Okay, sorry for that interruption. So ऑपरेट क्या करती है वो कंपनीज, दे गिव यू अ कैपिटल. ओके, you have to understand the market. You first know the market, you should know the market, you should have your experience as a trader. या फिर आप फ्रेशर हो तो they train you how to trade. वो उनको आपको एक कैपिटल दे देंगे, उनका कैपिटल आपको यूज करना है एंड यू हैव टू ट्रेड फॉर देम. तो सैलरी देते हैं प्लस दे आल्सो गिव यू अ शेयर इन प्रॉफिट. देयर आर मेनी कंपनीज, आई नो सच कंपनीज हु आर वर्किंग इन मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, ऐसी जगह पे इनके ऑफिसेस हैं एंड दे हायर ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स फॉर देम ऑन अ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. तो इसे ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन में आप देख सकते हो, एक करियर ऑप्शन होता है मार्केट में. देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या कंसल्टेंट आप बन सकते हो. यू कैन ओपन अ कंसल्टेंसी इफ यू आर एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट. अदर ऑप्शन इज यू कैन बिकम पाइथन और अल्गो डेवलपर. तो इसमें क्या होता है कि you have to learn coding. The Python एक programming language है which is used widely in stock market, automated to automate trades. तो Python developer आप बन सकते हो, algo tester बन सकते हो, जो develop किया हुआ है engineer ने code, उसको आपको develop करके test करना है जो develop किया है. And you can become an automation head also in this. Then there are other options like crypto mining. तो crypto जो एक नया करेंसी है, उसमें आप माइनिंग कर सकते हो. इफ यू गूगल और यूट्यूब में आप देखो तो देर आर स्कूल किड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स who are doing crypto mining with the help of their mobile and they are earning in million dollars. Okay, so ये एक बहुत अच्छा फील्ड है. then you can become a fine script developer. जैसे tradingview.com एक वेबसाइट है, जानी मानी वेबसाइट है ट्रेडिंग में, तो उसके पाइन स्क्रिप्ट के कोडर आप बन सकते हो एंड उनमें स्ट्रेटजीज कोड करके यू कैन सेल दोज coding strategies. And even tradingview.com offers job opportunities and you can join them as a coder. Then absolutely you can become a financial analyst or exchange design. आप खुद exchange design कर सकते हो और financial analysis कर सकते हो किसी बंदे का. So you can become a financial advisor and developer. So let's talk about market की जो basics हैं जिनके लिए अगर market जानना हो. Basics, let me see if anyone has joined or I'll just jump to. Okay. So if you all have joined, we have very good. So Shriya, welcome. I welcome you. So we are discussing basics of markets. So मार्केट में क्या होता है, वी शुड नो वर्किंग आवर्स. कि मार्केट में छोटा सा मैं बेसिक्स इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए, देन वी विल जंप ऑन टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो प्री ओपन में मार्केट ओपन से 9 and 9:08, ठीक है, 9 बजे से 9:08 तक मार्केट ऑर्डर कलेक्शन करता है. So this open window which is market opening is known as pre-open market. तो ये मार्केट लाइव नहीं होता बट इट्स प्री ओपन. जैसे हम लोग ऑर्डर कलेक्शन करते हैं तो ये ओपनिंग के लिए ऑर्डर कलेक्शन करता है. देन इट रिकंसाइल्स ऑर्डर फ्रॉम 9:09 to 9:14. ऑर्डर रिकंसाइल करता है. 9:15 AM sharp market is open for all of us. So you can start trading right from 9:15 to 3:30 PM non-stop. ठीक है, ये 6 घंटा 15 मिनट नॉन स्टॉप चलता है मार्केट. 3:30 PM एवरीथिंग शट्स डाउन ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल प्रोफेशन क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही काम करना है. इफ यू एन इंट्राडे ट्रेडर, 9 बजे से 3:30 बजे तक 6.5-7 घंटा ही आपको काम करना है. एंड 3:30 to 3:50 PM मार्केट क्लोज तो हो जाता है बट दिस इज कॉल्ड एज अ सेटलमेंट टाइम. तो मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जितने भी हैं, दे सेटल देयर ट्रेड्स. एंड अगेन एज अ गवर्नमेंट जॉब, आई कॉल दिस एज अ सेमी गवर्नमेंट जॉब. क्योंकि देखो मार्केट इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड एक्सेप्ट ऑल पब्लिक हॉलीडेज, सैटरडेज एंड संडेज. ठीक है, सो मंडे टू फ्राइडे 5 days a week मार्केट चलता है.
सारे पब्लिक हॉलीडेज जो हैं इंपॉर्टेंट वो मार्केट को होते हैं, सो यू कैन एंजॉय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइफ, ओके, एंड अर्न फैबुलस इनकम बाय वर्किंग प्रोफेशनली इन मार्केट विथ अ सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, सो एज अ न्यू बी, अगर आप नए हो, आई रेकमेंड यू इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो तो 9:15 to 9:30 अवॉइड एनी ट्रेड बिकॉज दैट इज द मोस्ट वोलेटाइल पीरियड। ठीक है, ट्रेड्स कैन गो अपसाइड डाउन एंड दे कैन रिवर्स इन सिंगल कैंडल। ठीक है, सो इसलिए 3:30 बजे 9:30 बजे तक हमें कुछ नहीं करना है। नाउ व्हाट इज बेटर, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सबसे बड़ा और सबसे बेहतर क्या है। सो एक बार समझते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में क्या है, यू लर्न अबाउट चार्ट्स, यू एनालाइज चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को आप स्टडी करते हो, उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है इसका आप डिसीजन ले लेते हो। देन अ फंडामेंटल एनालिसिस इज समथिंग वेयरइन आप बैलेंस शीट्स, रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर फाइनेंशियल रेशियोज, उसमें आप सारा रिसर्च करते हो। सो इट इज ओनली अबाउट कंपनीज हाइजीन, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल हाइजीन, इसको आप स्टडी करते हो। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुरा है या ये सही है, but as a person I like to have a balance of both, so it's a fusion of both. So I recommend techno funda analysis, and we teach this techno funda analysis in all my courses. We are not biased either for technical or for fundamental. We take both of views so that their drawbacks can be avoided. कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, why are we understanding both aspects, ये पहले समझ लेते हैं। टेक्निकली क्या होता है, कभी कभी चार्ट पे कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, चार्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड क्योंकि उसमें बाइंग पावर या बाइंग डिसीजन नहीं आया, बाइंग प्रेशर नहीं आया, तो चार्ट में भी साइलेंट साइडवेज चार्ट हो जाता है। बट कंपनी में भी फंडामेंटली स्ट्रांग, कंपनी के प्रमोटर्स एथिकल हैं, फाउंडर्स एथिकल हैं, दे हैव अ गुड ऑर्डर बुक, दे हैव गुड प्रॉफिटेबिलिटी एवरीथिंग, बट बायर्स की नजर में नहीं आएगा वो स्टॉक, इसलिए वो चार्ट पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, जिस दिन बायर की नजर उसमें पड़ गई, स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अप। ठीक है, तो हमें वो लेट मिल जाता है चार्ट पे। वॉइस वर्सा भी हो सकता है, चार्ट पे कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेटेड होगा चार्ट, बट फंडामेंटली कंपनी में भी वेरी वीक। आपने पिछले 2 साल में देखा होगा आईपीओ जो आए हैं, दे हैव फेल्ड, मतलब जो प्राइस में आपने आईपीओ अगर लिया था तो उसके लिस्टिंग उसके बहुत नीचे हुआ, लॉस हो गया आईपीओ में सबको। ठीक है, और कम से कम 6 महीने लग गए कंपनी को उस आईपीओ प्राइस तक आने के लिए। सो दैट इज हाउ फंडामेंटल अगर आप सिर्फ देखोगे और टेक्निकल नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। So I recommend and I follow strongly techno funda analysis, which is a technical analysis as well as fundamental analysis. And if both these flags are giving us green signal, then only we go and initiate a trade. तो मैं आपको examples भी दूंगा मेरे trades के। ठीक है, तो this is for again beginners who have joined us कि candlesticks क्या होती है। So it is nothing but a price point. There are four price points. So a combination of these 4 points जो है OHLC, which is open price, ये क्या open price, high price, low price and closing price. So this is green is a bullish candle and red is a bearish candle. You can Google this. It will give you ready-made analysis PDF for candlesticks. तो हम लोग ये पूरा बेसिक्स ही लेते हैं, हम पहले 15 दिन 8 दिन सिर्फ बेसिक्स पे काम करते हैं, बिकॉज आई टेल यू ये बेसिक्स पे ही आपको चार्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड आई एम अ पर्सन जो हमारे कोर्सेज में मैं ये सिखाता हूँ कि आपको बिना इंडिकेटर ट्रेड कैसे करना है। ओके, सो प्राइस एक्शन इज द किंग। ठीक है, इंडिकेटर बाद में बनता है, पहले प्राइस बनती है, सो दैट्स व्हाई यू शुड रेफर प्राइस एक्शन। दीज आर सम कैंडल एग्जांपल्स कि ये कैंडल बनते कैसे हैं। ये डबल कैंडल ऐसी होती है, देन देयर आर कैंडल्स लाइक दिस, ईच कैंडल हैज गॉट अ नेम। ठीक है, ये हम देखते हैं कि हर कैंडल को क्या करते कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, उस कैंडल का मतलब क्या है, एंड वेयर प्राइस विल गो आफ्टर फॉर्मिंग सच अ कैंडल पैटर्न। ठीक है, सो हर एक कैंडल का इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन करके वी फॉलो द प्राइस एक्शन कि आगे क्या होने वाला है। एंड दीज कैंडल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पैटर्न्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
सो अभी सिंपल सेटअप अगर मैं आपको बता दूं तो देयर इज अ शूटिंग स्टार, दीज आर ऑल सिंगल कैंडल पैटर्न, हैमर इज अ सिंगल कैंडल पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ये दोनों अलग अलग कैंडल पैटर्न है, ये दो दो मल्टी कैंडल पैटर्न है। तो इसमें हम लोग ट्रेड करना सिखाते हैं। आई विल शो यू जस्ट वन एग्जांपल। ये हैमर देख लो, पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, okay, and then at the end of downtrend you should suddenly find a hammer which is a body like this। hammer इसे कहते हैं, so this is a hammer। ये एक हैमर बन गया जिसमें छोटा सा नीचे विक है, ठीक है, लंबा विक होता है नॉर्मली, यहाँ पे कैंडल में छोटा दिख रहा है बट चार्ट पे लंबा दिख सकता है। सो दिस इज अ विक एंड देयर इज अ बॉडी, ऊपर इसके कोई विक नहीं, देयर इज नो विक ऑन अपर साइड। सो दिस इज जैसे अपने घर में हैमर पड़ी होती है, द सिंबल इज एग्जैक्टली सेम, ओके। सो ये हैमर हो गया। इफ यू लर्न दिस हैमर एट द बॉटम, ठीक है, एंड इफ यू फाइंड दिस spot this in any chart, you can assume that price may go up, there are other aspects also, and price may go up later, ठीक है। Then there is a shooting star pattern which is exactly like inverted hammer, छोटा सा। We'll explain this how to interpret shooting star and hammer separately। तो shooting star देखते हो तो after a uptrend, after a huge uptrend, if you spot a shooting star like this, price may go down, ठीक है। And I'll show you some important trades also on live chart। तो सेटअप का रूल क्या एक बार देख लेते हैं, सिंपल सेटअप, कि मोस्ट इफेक्टिव जो शूटिंग स्टार जो इवनिंग स्टार होते हैं वो होते हैं डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में होते हैं। हैमर और मॉर्निंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में इफेक्टिव होते हैं। और दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप देख लो, क्रिप्टो देख लो, डाउ थियरी देख लो, किसी को भी देख लो, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज, okay। So I'll show you how this is impacted and effective on other aspects। So let's have a live chart also, okay। So how we use practical and things, this is what it is। बैंक निफ्टी जो है इसमें हम चेक करके देख लेते हैं। I call बैंक निफ्टी as a highly volatile and wild animal, ठीक है। तो दुनिया का सबसे वाइल्ड एनिमल ये बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। So whatever is working on Bank Nifty will definitely work on any instrument around the world. Okay, so let's try and find it out. Give me a moment, there is some disturbance. Please give me a moment. Okay, so sorry for that trouble and inconvenience. So let's find this out. There are some candlestick patterns. Look at this. This is a shooting star and we have a fall. There we will have another examples also. There is a shooting star. This is a shooting star. We have a fall. So you can get quick trades and we do scalping. So scalping क्या होता है? We quickly enter and exit in 2-3 candles. So I exit in same candle, okay, on a 15 minutes or hourly daily time frame. If you are getting such a good trade, it may give you 100, 200, 300 points also. If you have like this, see, you have a hammer and you have important trade. This is a hammer and you have rise, like, so we take many patterns like this. For example, this is an engulfing pattern which I have highlighted. Engulfing pattern, you can take a trade. And again, there is a morning star pattern, you can take a trade over here. This is a bullish harami pattern, you can trade a long trade over here. So this is what we teach our students to conduct a trade। Let's move on। So support and resistance एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। So you can decide your own levels, 15 minutes, hourly, daily, जो भी आप level या time frame आप decide करते हो, then you can think of having your support and resistance, okay। So let's understand। I'll skip this bank nifty part because bank nifty is something uh, which is very volatile,
So I'll ignore this back entry. Let me show you on chart support and resistance and shooting star and morning star. If you look at this, we have a shooting star. This is an open bank nifty. Let me open this. I hope you are able to see this. See this. This is an evening star pattern. Fabulous pattern. I'm on daily time frame. Sir, Yeah. sir, screen is not visible. Oh, is it? Give me a moment. Thank you. I am going to share it. Oh, इतनी देर से screen visible नहीं था. I'm so sorry. Okay. Is it visible now? Yes, Better? yes. Okay. Thank you. So this is how we trade. I'm going to share this. So screen visible नहीं था, so you would have missed this also. ये देखो मैं आपको बता देता हूँ. So these are, I said, these are some career opportunities. If this wasn't visible, let me quickly glance through that. So you can have your career opportunities. Youngsters, if they are youngsters, R&D जो मैंने explain किया था, research and development, operation, become a professional trader, algo, can become a Python developer, crypto में you can have a career, fine script developer you can have a career, and financial analysis you can become. These are some market hours we discuss this. Technical and fundamental analysis, candlesticks. Candlesticks are like this, many candlesticks. So we discuss every individual candle with our students in our course, and we interpret कि ये candle के बाद क्या होना चाहिए, इसका open कहाँ है, low कहाँ है, high कहाँ है, where should it go, and in subsequent candle, right? So इस तरह से हम discuss करते हैं. Shooting star, hammer, morning star, evening star. So this is a hammer pattern. Look at the price is going up. This is a shooting star pattern. Look at price going down. Now let's look at it in chart. Here are chart, and we have evening star pattern. So this is an evening star pattern. Uptrend होना चाहिए, strong uptrend, and you should find this evening star. I'm connecting my charger. And if you find this evening star pattern, you can expect a fall. And look at the fall, marvelous fall. 44,000. What is the high? यहाँ पे आपको high low दिख रहा होगा. 44,400 assume करें 44,200. So 44,200 से लेके we had a fall here 41,000. So 3,800 point fall, huge fall. And if you have this pattern, look at this is called as bearish engulfing pattern, and we have a fall. And I don't have any indicator on my screen. People apply 10 indicators and still they are confused. We trade following simple candlesticks, okay, without indicator. So this is how you draw support and resistance. Let me show you a hammer also, and followed by hammer we will have an uptrend. Let me quickly spot a hammer here, and we will be in yes. So hammer will always be effective at bottom. Say this is kind of a doji. Yeah, this is a hammer if you ignore this small wick, and at bottom quickly find this is a hammer. Say this beautiful hammer, and hammer is giving you huge follow up, right? There is a fall. This was a fall. This is a kind of a retracement, and there is a fall, a hammer, strong hammer, and there is a close above hammer. You can go long, and यहाँ से कितने पॉइंट मिल गए देखो 35,980 से लेके we had a 38,000 again 3,000 daily time frame पे. So 3,000 point fall rise. So this is how candles work beautifully. This is a morning star pattern, beautiful morning star pattern. Gap down candle है or strong up candle है, you can go long on the top of this candle and you have a good point. Okay, this works best on 15 minutes time frame also. So 15 minute time frame पे अगर हम discuss करते हैं, let's say this, look at it. So we have a morning star, beautiful morning star here. This is also a morning star. 15 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग में you got huge profit. Say this, एक कैंडल में ही आपके 100
पॉइंट बन जाते हैं इतने बड़े कैंडल में 15 मिनट में. So even if you 100 points, you get 100 points. I keep trading in around 500 to 1000 quantities. 500 into, even if you are capturing 50 points, अगर delta 0.5 पकड़ लेते हैं, 25,000 in one candle, you are done for the day. Okay. So normally MBA जो fresh MBA है इंडिया में, fresh graduate MBA, if he is not getting placement, फ्रेशर को जो सैलरी होती है 15 to 70,000. ओके, फ्रेश एमबीए का है, he earns a month by logging for 12 hours a day minimum. ट्रैवल टाइम पकड़ के आप 12 घंटे पकड़ लो, but here by working just 9 to 3 you are getting these kind of amount. If your investment is say 3 to 5 lakh rupees, or even if you can start with 50,000 rupees, we teach how to trade on one lot also. So say for example one lot 25 quantity into 50 point per day 1250 into सारे दिन ट्रेड नहीं मिलते या प्रॉफिट नहीं होता, जस्ट अज्यूम 15 दिन मिल गए. इवन इन वन लॉट से 10,000 इन्वेस्टमेंट यू आर अर्निंग 18,000 a month into 12 महीने पकड़ लो, 2,25,000 on an investment of, if you do it systematically and with discipline. Of course ठीक है, लॉस भी होते हैं, but you have to understand how to limit losses. ठीक है, that is a key aspect of trading. So this is how we trade using simple candlestick patterns. Let's move on, आगे भी चलते हैं. So there are say so many indicators. Trading view में इतने सारे indicators हैं, almost over 1 lakh indicators, community scripts. और इतने सारे indicators होने के बावजूद only 25 indicators are allowed in premium version. Okay, so आप कितना इंडिकेटर यूज करोगे? That's why I recommend don't use indicators and work basis this. Okay, so now next topic, how to decode our multi-baggers. तो हमें जो multi-bagger ढूंढने हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं हम? ठीक है, this is the important aspect. I'm going to show you how to use ChatGPT also. So today's hot topic is ChatGPT and using ChatGPT for fundamental analysis. Okay, this is how you use it. Just a moment, there is some background disturbance. Okay, so again, regret that botheration. So ये रहा. This is how we decode necklace pattern. So necklace pattern में होता क्या है? We catch falling knife in necklace pattern. So I have many articles I'm publishing regularly on YouTube. Also, I'm doing it regularly on my trading view. So you can follow there, trading view and YouTube. You will get latest and updates about how to learn more and how to practice this. Okay, so we can use this and do this. So trading, हम लोग जो trading करते हैं इसमें, stock which has fallen to its bottom, right away bottom को उसको कैसे पकड़ना है, and then again it goes back to its previous lifetime high. I call this pattern falling down from lifetime high and again going back to lifetime high. It completes a necklace. So that's why I call it as a necklace pattern. So let's understand this. ये कैसे होता है? ठीक है, ये रहे सो हमारे मल्टी बैगर्स. ये उषा मार्टिन है, SDBL स्ट्रॉन्ग डिस्टिलरीज. ठीक है, उषा मार्टिन अगेन यू सी फॉलन फ्रॉम लाइफ टाइम हाई. इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन. ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में या एक महीने में मिल जाता है. ठीक है, सो आई टीच हाउ टू practice them, how to catch them at right time and earn huge profit, or at least how to follow them. So ये कभी कभी क्या होता है, it completes one necklace, goes back, consolidates, completes second necklace, and third time when it goes, say this completes a bigger necklace, and after reaching here it doesn't stop, it goes high. So I teach how to calculate target. अगर ये यहाँ पे आ गया इस high पे, तो यहाँ से ये ऊपर कितना जाएगा, कैसे जाएगा, कब तक जाएगा, ये भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इट्स ऑल मैथ्स गाइस, एंड लेट मी टेल यू, मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में.
and I was very weak in maths in my school days. ठीक है, मैं स्कूल में मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल एट लेटर पार्ट ऑफ लाइफ आई रियलाइज मैथ इतना बुरा भी नहीं है मैथमेटिक्स. ओके, एंड स्टॉक मार्केट हैज गिवन मी दिस कन्विक्शन कि मैथ्स समझने में काफी आसान होता है. हम लोग अपने दिमाग में उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके रख देते हैं. सो इफ यू डू दिस सिंपल कैलकुलेशन नहीं है जो आप कर सकते हो, और इसके जरिए आप कैलकुलेट भी कर सकते हो टारगेट क्या होगा इसका. सो टीटागढ़ वैगन्स वाज द लास्ट wag stock which completed our necklace pattern. I'll show you our latest patterns also जो मैं ट्रेडिंग व्यू पे अपलोड करता हूँ. For those who joined late, this is my website seshayuscalpers.in. यहाँ पे जाके जो मैं डेली या रेगुलरली ट्रेड अपलोड करता हूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं, कैसे एंट्री कर सकते हो आप, और कैसे मैंने ट्रेड किया खुद के. यू कैन लर्न. गो टू seshayuscalpers.in. मैं अपने ग्रुप में लिंक भेज दूंगा. गो टू चार्ट्स एंड एनालिसिस. ट्रेडिंग में जाके देयर इज एन ऑप्शन चार्ट्स एंड एनालिसिस, और यहाँ पे जाके आप ट्रेड और वीडियोस देख सकते हो मेरे जो लाइव हैं. ओके, एंड गाइज, before moving on to ChatGPT, I would like to show you my trading screenshot. मैं बनी बनाई बातें नहीं करता. This is my trading screenshot. I had invested so much of amount and this amount has become so much. Okay, 64,000 का 1 lakh 1 हो गया है. This is my trading screenshot. So I have exposure in these stocks. ये पुराना screenshot है पिछले webinar का, somewhere in 22nd of 28 को मई को लिया था. This is my today screenshot, trading screenshot Seychelles scalpers का, and I have exposure in BHEL, GPPL, Imagica, ISMO सारे हैं. And if you imagine and if you see this, I am holding this stock even if I have a loss of 10k and I'm still in profit, guys. So this is the beauty of stock market and dealing in cash market. I'm not dealing in F&O with this screenshot. These are all my holdings in cash market. ठीक है. Now the real game is on. Let me show you ChatGPT. ठीक है. So ChatGPT को how I use it and analyze for fundamental analysis. So if you use this, ChatGPT एक बहुत बढ़िया काम है. And let me, जिनको पता नहीं है, let me tell you what is ChatGPT. तो ChatGPT क्या है? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? I'll show you. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? ऐसे गूगल करते हैं किसी चीज को. फॉर एग्जाम्पल विप्रो एनालिसिस या विप्रो परफॉर्मेंस, विप्रो स्टॉक का परफॉर्मेंस. तो इसको मैंने एंटर कर दिया. आई हैव टू स्क्रॉल थ्रू सो मेनी वेबसाइट्स. ये देखिए, हर एक वेबसाइट को मुझे देखना पड़ेगा. मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो कि कौन से वेबसाइट पे सही डेटा है, ठीक है, या फिर सही चीज है, या मुझे जो चाहिए वो किस वेबसाइट में मुझे ढूंढना पड़ता है. एंड इतना ही नहीं है, देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं. डू वी रियली हैव प्रैक्टिकल टाइम टू गो थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस प्रैक्टिकली? हम लोग सिर्फ पहले 4-5 ही देख लेते हैं. अगर अच्छा लगा तो आगे चले जाते हैं और ये 2-3 ऑप्शन में जाके देख लेते हैं, राइट. सो इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज अ कंफ्यूजन. सो इसका एक सही अभी सॉल्यूशन ये है, यू कैन यूज दिस चैट जीपीटी. आई डू लॉट ऑफ माई रिसर्च इन चैट जीपीटी. सी दिस. सो आई यूज इट फॉर ऑल ऑफ माई थिंग्स. यहाँ पे सेव होता है. सो चैट जीपीटी क्या है? इट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI है ये, ठीक है. और ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? आपको सारी चीजें बता देता है. सो यू कैन चैट विद AI. इट इज एन आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, ठीक है. यू कैन चैट विद देम. ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने करवाया था आपके लिए. तो आई विल से, और ये आपको बिना पूरे इंटरनेट सर्च करके, बिना वेबसाइट स्क्रॉल किए आपको सारे जवाब दे देता है. ओके, सो लेट्स एनालाइज. Can you please type your any of stock? उसका फंडामेंटल अब चेक करते हैं. Can you type any of your stock in chat box? Let's see how many are saying this. Type in your stocks which you are interested to know their fundamentals. Chat box में type करिए. Let me see. Screen wasn't visible. I'm so sorry. Now I hope screen is not visible. I have disabled my screen sharing. Just please type in any couple of stock names, company names. We will use them on ChatGPT for knowing fundamentals.
ऐसा ना मानो कि मैंने जो खुद तैयारी की है और वो मैं आपको रेडीमेड बता रहा हूँ, राइट? सो इफ यू टाइप इन सम नेम्स इट विल बी इजी। चैट ऑप्शन है नीचे आपके जियो मीट में, यू कैन टाइप इन चैट नेम और यू कैन टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। एनी वन नेम गाइस, क्योंकि मैं अगर अपने मन से डालूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, एंड आई विल ऑल्सो सी if my voice is reaching you and you're understanding it, you're finding it interesting. Any one two names, one chat box, or you can quickly unmute and tell me. ITC. ITC, super. Okay, thanks Anju. So मैं देख लेता हूँ. I am sharing my screen again. ITC आ गया. Let me see. So let's find out ChatGPT के through कि करता क्या है. So इसके लिए ना पहले आपको करना क्या होगा? I'll show you since beginning. If you don't know about it, if you are already aware about it, just reiterate this. Open an account here, chat.openai.com. So आप गूगल कर सकते हो OpenAI को. It is OpenAI. The name is OpenAI. ठीक है, ये मैं लिंक चाहिए तो आपको चैट पे डाल देता हूँ. And you can use this chat.openai.com वाला link. Enter. You will have to create your account. यहाँ पे पहले बार साइन अप करना पड़ता है, एक OTP आएगा and that's it. That's only it needs. ठीक है. You can also log in with your Google account. तो एक बार one time sign up है, ठीक है, and it remembers its own chat history. आप जो भी इससे बात करोगे, it remembers every history. ठीक है, और उस हिस्ट्री को खोल के you can discuss with it. जैसे हम लोग एक ह्यूमन से बात करते हैं ना, एक दूसरे से, दोस्तों को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता कि अपनी पिछली बार ऐसी बात हुई थी. So that's why and that's how ChatGPT has its own memory as well. तो ITC बोला था अंजू मैम ने. So let's discuss. I will. और इसमें ना बहुत जरूरी ये चीज है कि आपके प्रॉम्प्ट यानी कि जो आप उसको कमांड दे रहे हो, that command should be very brief or it should be very interpretable. कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कंफ्यूज होगा तो कंफ्यूज आंसर ही आपको देगा. सो आई कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज गार्बेज इन गार्बेज आउट. ओके, वैसा नहीं होना चाहिए. आपने अगर उसको कचरा दिया तो इट विल रिटर्न यू कचरा ओनली. सो आईटीसी अंजू ने बोला है, तो मैं एक बार इसको बताता हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एनालाइज आईटीसी स्टॉक परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 5 years. लेट्स सी क्या दे रहा है. इट इज टाइपिंग लाइव. श्योर. See, this is live chat gpt. It's giving you a starting name और ये आपको पूरा पैराग्राफ दे रहा है. So I'm again a lazy person. It's giving me, it's going on and on and on like our wife. ठीक है, जैसे वाइफ बोलती जाती है, it's starting and not stopping now. It's beyond my control. Now either I will have to read this entire paragraph and understand, which will take a minute or two, but I'm a person who does not like to read paragraphs. ठीक है, so what I'll do, I'll copy this, or I'll simply ask him, please summarize that in table format. ठीक है, तो मुझे tabular data चाहिए because table में analysis बहुत easy हो जाता है. So I have written a prompt over here. Please summarize that. That मतलब उसको memory है ना. Let's check that कि memory है या नहीं, या दिमाग में नहीं है उसको. So summarize that in table format. I have given a prompt. Let's see क्या बोल रहा है ये. Sure, क्या बोल रहा है? I'll do that. Obedient, एकदम obedient. And I have that in table format. So table में मुझे मिल गया. तो पूरा paragraph जो है ये, this entire paragraph is now available in 5 rows. Simple, easy हो गया, वही data सारा. So इस तरह से हम कर सकते हैं. Any other stock if you want to? Example, quickly unmute and tell me if you are interested. कोई और दूसरा स्टॉक चाहते हैं कि हम उसका चेक करें चैट जीपीटी के थ्रू परफॉर्मेंस. 2018 से बता रहा है ये स्टॉक प्राइस इतना था. हम लोग इसको ये पूछ लेते हैं कि इसका आईटीसी परफॉर्मेंस
समरी इन टेबल फॉर्मेट। अब ये खाली मैंने परफॉर्मेंस बोला, उसको फाइनेंशियल नहीं बोला। लेट्स सी क्या बोलते हैं। आईटीसी का परफॉर्मेंस देखो फॉर लास्ट 5 years। अब ये क्या दे रहा है, पूरा फंडामेंटल परफॉर्मेंस दे रहा है। हियर इट रिटर्न्ड अस प्राइस एंड सो मेनी थिंग्स। नाउ इट्स रिटर्निंग मी फाइनेंशियल फंडामेंटल परफॉर्मेंस। सो 2008, 5 साल बोला था मैंने, 1 2 3 4 5, 5 years। व्हाट इज इट सेइंग? रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट क्या था, अर्निंग, डिविडेंड कितना दिया, एंड व्हाट वाज द स्टॉक प्राइस ईयर ऑन ईयर। तो 2018, 19, 20, 21, 22। अब हाउ टू इंटरप्रेट दिस, ये हमें सब पता होना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर हर साल है ना, हर चीज में ग्रोथ होनी चाहिए। देन ओनली द कंपनी इज गुड परफॉर्मिंग, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, स्टॉक प्राइस 3073 238 आ गया, बिकॉज देयर इज अ फॉल नाउ इन मार्केट। ठीक है, और विप्रो में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज था लास्ट मंथ, इसलिए स्टॉक प्राइस हैज फॉलन, बट एवरीथिंग एल्स इज ग्रोइंग। सी दिस। डिविडेंड कितना दिया था पहले 2018 में, प्री कोविड, 5%। नाउ दे आर ऑफरिंग 7.5%, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि डिविडेंड ज्यादा मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा। कैन यू सी दिस, अर्निंग पर शेयर में भी बढ़ोतरी है। नेट प्रॉफिट 11,000 करोड़ था, अब बढ़ के 14,000 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 45,000 करोड़ था, बढ़ के 50,000 करोड़ हो गया गाइस। तो दिस इज हाउ आई नो एवरीथिंग थ्रू सिंपल प्रॉम्प्ट। मैंने सिर्फ इतना सा छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है। परफॉर्मेंस टेबल फॉर्मेट में चाहिए मुझे, लेस देन अ मिनट ये सब मिल गया। नाउ अब ये हो गया मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्विकली गो टू चार्ट एंड एंटर विप्रो। दिस इज हाउ वी डू आवर टेक्नो फंडा एनालिसिस। तो ये इसमें हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज कंपनी सेइंग ऑन चार्ट, डेली, वीकली, मंथली, ये टाइम फ्रेम सारे देख लेते हैं, एंड देन वी डिसाइड वेदर टू बाय और अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, सो दिस इज a fusion or a balance of techno funda analysis. This is how we use ChatGPT, guys. I hope you found it useful. So this is one of the important aspects which I promised you today. और ये स्क्रीनशॉट विप्रो का लिया था, आई शोड यू आईटीसी ऑल्सो। ठीक है, और एक important टॉपिक विच आई promised you, which is RS। अब ये क्या है देखो, I got it through ChatGPT। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, this is a ChatGPT prompt, but I know the interpretation। ठीक है, so I use this prompt, use this indicator to identify whether to buy or avoid any stock। ठीक है, ये करता क्या है, what is RS? माइंड यू ये RSI नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं है, दिस इज ओनली RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो ये करता क्या है कि पर्टिकुलर स्टॉक या जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, इट कंपेयर्स दैट विथ इंडेक्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और उसे हमें कंपैरेटिव एनालिसिस देता है कि ये इससे बढ़िया है या इसे खतरनाक है, जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटीसी लूँ, तो आई कैन कंपेयर आईटीसी और एनी स्टॉक इन इंडिया विथ निफ्टी। ठीक है, क्योंकि निफ्टी क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स है। So I can compare stock with Nifty or any other index, and I will decide whether that is outperforming or underperforming। तो ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पे है whether that line। Now let's see that indicator देखते हैं। RS indicator इस तरह से होता है, relative strength index। Say this stock है, stock का नाम है ISMO। यहाँ पे देखो, the stock is in consolidation, it is in the range, it has got very thin candles, daily range, ये daily period है। बट आरएस देखो, आरएस ये डॉटेड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। सो डॉटेड लाइन इन जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन है ये इंडेक्स की, तो इसके लाइन के ऊपर ही चल रहा है ये स्टॉक। ठीक है, सो इट हैज अ स्ट्रेंथ कंपेयर टू निफ्टी। तो मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, मैंने इनपुट दिया हुआ है आरएस को कि आई एम कंपेयरिंग दैट विथ निफ्टी। तो अगर ये ऊपर चल रहा है बट कंसोलिडेशन है, तो जब ये ऊपर जाएगा कंसोलिडेशन रेंज के बाद, इट विल आउट परफॉर्म निफ्टी, राइट। और यही हुआ, देखो छोटा सा एक फॉल आ गया इसमें, and then it has started moving up, and then it has never crossed this zero line at downside, it has always stayed above। And look at this, once this swing high is crossed, it has given us a huge 50% plus return। I have traded this stock personally, ठीक है, लास्ट मंथ। तो ये आरएस बहुत ही बढ़िया फैक्टर है विच गिव्स यू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वर्सेस एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं,
I'll show you on live chart also. Let me show you on live chart. चेहरा विप्रो को अगर मैं RS इसमें लगा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए विप्रो को मैंने RS इसमें लगा दिया इसमें. So I'll add this as Wipro here and let me add RS. रिलेटिव स्ट्रेंथ लग रहा हूँ मैं, ठीक है. So let me select this relative strength. RSI नहीं लेना है हमें, so you'll get lot of options of RS. वो नहीं लेना है हमें. RSI ले लोगे तो it will give you confused RSI indicator. वो नहीं लेना है. So relative strength मैंने select कर लिया and I have this. See this. This is RSI. Ignore it. और ये रहा relative strength. So इसको मैं अगर select करता हूँ, say this. I will have option. I will have option. I go to settings और उसमें मुझे करना क्या है. सो चार्ट में कंपैरेटिव सिंबल क्या होना चाहिए वो मुझे पहले डालना पड़ेगा. व्हाट इज इट? ये देखो मेरा स्टॉक का नाम है विप्रो एंड आई एम कंपेयरिंग दैट विद निफ्टी. सो मुझे वहां पर एंटर करना पड़ेगा कि निफ्टी के साथ में इसको कंपेयर कर रहा हूँ. सो निफ्टी 50 NSE सिलेक्ट किया. नाउ दिस इज कंपेयरिंग विद निफ्टी, एक्सक्यूज मी, एंड पीरियड 50 ले लिया. डिफॉल्ट सब कुछ डिफॉल्ट रख रहा हूँ. स्टाइल वाइल नथिंग, नो चेंज. आई जस्ट highlight this. And whenever this blue line, say this crossing 0, that means the stock is now gaining importance and it is outperforming Nifty. Nifty को ही outperform कर रहा है because this zero line is an indicator benchmark की Nifty के साथ जैसे Nifty बढ़ रहा है उससे ज़्यादा stock बढ़ रहा है. Okay, so the returns are now outperforming Nifty. So यहाँ पे वो बढ़ रहे हैं और जब ये नीचे आ गया that means stock is now underperforming Nifty से ज़्यादा गिर रहा है. We can buy at point when stock is outperforming or consolidating at zero line. It will definitely go up and give you good returns. ठीक है. So Wipro हो गया. Let's look at another stock. Reliance सबका favorite होता है. Let's look at Reliance. So I will have my own homework done on stocks like this. So see this. This was underperforming, and if you see, this is now getting consolidated in this range. If it breaks this range, Reliance will start outperforming Nifty. Okay, क्योंकि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस और आईटीसी दोनों को ऊपर जाना होगा तभी इंडेक्स ऊपर जाएगा. बिकॉज दीज आर हेवी वेट स्टॉक्स इन निफ्टी. दूसरा एक हाथ देख लेते हैं. आईटीसी देख लिया हम लोगों ने. टीसीएस इज अगेन इंपॉर्टेंट. लेट्स सी टीसीएस. IT stocks are falling because IT index is falling. This is underperforming. Whenever it is outperforming Nifty, it gives huge returns. So ये daily पे है. हम लोग monthly पे एक बार देख लेते हैं. On a monthly time frame also, this was outperforming. Even the stock price was not high. ये शुरू में इसने बता दिया था कब 2010 से the stock has been outperforming Nifty for a period of say 7 years. और उसके बाद भी after staying there in that range for maybe few 2-3 years, stock is again outperforming since 2018. ठीक है. निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा है. सी दिस. यहाँ पे रेंज छोटा सा है आउट परफॉर्मेंस का बट स्टॉक हैज गिवन ह्यूज रिटर्न. यहाँ से भी देखो आप डबल हो गया ये 1200 से सीधा 4000 पे चला गया है. सो इट हैज ऑलमोस्ट मोर देन ट्रिपल्ड. 3x से ज्यादा रिटर्न दिया है. विद जस्ट सिंपल थिंग दिस ऑन हायर टाइम फ्रेम. इफ यू एनालाइज दिस रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये हमें बहुत बढ़िया व्यू देता है कि ये स्टॉक असल में वीक है या स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी. यू कैन टेक अ बाय कॉल बेसिस योर टेक्निकल एनालिसिस कि ये हाई पे है, लो पे है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, एंड देन you can decide buying or avoiding that stock. So this was another thing which I promised you. Here are relative strength. Okay. There are some swing trading stocks which we traded. I'll take you through this. Rabat, Ismo, Chamanlal, ये stocks हैं जो मेरे holding में भी थे. You must have seen them. KCL. I would like to share KCL with you. One more. KCL को एक बार देख लेते हैं. Say this. इसका मैं आपको एक समझा देता हूँ. What is it? Say this. इसने क्या किया है? KCL
on a weekly time frame or a monthly time frame also. This has completed एक W बन गया ये and W बना के it has completed a necklace pattern. Now if you see, I would see इसका जो टारगेट हो सकता है वो समवेयर अराउंड, इसमें हम लोग बता देता हूँ मैं आपको टारगेट क्या होगा इसका। वेट अ मिनट, ये कम से कम 200 तक जा सकता है स्टॉक। ओके, so if you see this KECL, Kirloskar Electric, the entire Kirloskar group, fundamental मैंने पहले स्टडी कर लिया इसका, the entire Kirloskar group is doing phenomenal job in reconstructing their companies. तो कंपनी में काफी सारा रिस्ट्रक्चर चल रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग में फाइनेंशियल वो डेट अपने कम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे अब वो फिनसर में आ गए, फाइनेंशियल मार्केट में आ गए हैं, they are into electric also. So the group is now getting into new flats, young generations take over कर रही है and they are getting doing it aggressively and getting whole things in place. So इसने necklace तो अपना complete कर लिया, the target would be at least this will 50 to 70% यहाँ से और अब जाने की इसकी संभावना है, ठीक है। So this is how it has outperformed. Yeah, any questions? To interrupt in between, if someone wants to enter this stock, what would be the interest now as it has already outperformed? Yes. So if you want to enter here, it's a good question. Let it get consolidated. This is a good time. You can enter on daily time frame. Go to daily time frame. If it falls here, you can enter below this candle and this candle as a support. So 80 to 90, 95 would be the range to enter in this stock. A good range. Thank you, sir. Okay. Let's see another stock, which is our star performer, Chand and Company. See this, guys. This stock, I'll show you the beauty. This is my potential necklace stock. See this. This has already dropped down and it has started its U-turn journey. और मैं आपको ये चीज बता दूं, see this falling since 2017 और ये कब तक गिरा हुआ है? 2020 तक गिरा हुआ है, 3 साल गिरता रहा, ओके, और अभी भी ये चल ही रहा है कंसोलिडेशन में। So 2017 to 2020 it's taking time, 23 6 साल 7 साल होने को आए इसमें and stock is in consolidation. अब क्या होगा? Mark my words, 250 ये जब क्रॉस कर लेगा ना, विद इन 1.5 year और 2 years, जैसे इसको 7 साल लग गए ना, ये अगले 2 साल में ये 250 अगर क्रॉस कर जाता है, 250 का दिस विल बिकम 600 in just 2 years of time, less than 2 years of time. I am waiting for their balance sheet this year. ये मार्च का जो अभी रिजल्ट आया वो आई एम वेटिंग फॉर इट एंड देन यू विल सी इफ मार्केट आउटपरफॉर्म्स। अब चैलेंज क्या है? दिस इज एन इलेक्शन ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं अगले साल, सो एवरीवन इन मार्केट इज कॉशियस, ज्यादा बुलिशनेस नहीं आएगी मार्केट में, it will become only after next election. So everyone is cautious. This is getting consolidated. See monthly mein, weekly mein bhi you can see a lot of consolidation. And I have entered this stock here only at around, what was the level? 140, 150 was my buying average here. Let me show you on daily time frame. Because I was so damn confident about this. Fundamental मेरा इसमें अच्छा है दिख रहा है. Because see what is Chand and Company, I tell you. This is a publishing company. और एस चंद करता क्या है? देयर आर एनसीईआरटी स्कूल्स, ठीक है, जो स्कूल्स हैं और जो एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं, उनके बुक्स पब्लिशिंग के ना ऑर्डर सारे इनके पास जाते हैं, एस चंद एंड कंपनी के पास, ठीक है। सो दे आर अ मोनोपोली प्रिंटर फॉर एनसीईआरटी सिलेबस। और क्या हुआ है मजे की बात, लास्ट ईयर सिलेबस हैज चेंज्ड, ठीक है, तो जब भी सिलेबस चेंज होता है ना, तो देयर इज अ रूल एंड देयर इज अ नॉर्म that you have to give 2 years print order in advance to printing company. So इनके पास 2 साल का ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है प्रिंटिंग का, एंड दे आर रिस्ट्रक्चरिंग देयर डेट एंड फाइनेंसेस, तो कंपनी इज रिड्यूसिंग देयर डेट आल्सो, तो बोरोइंग्स जो है वो कंपनी अपने कम कर रही है। एंड यू कैन सी 144 से सीधा कहाँ पे चला गया ये
We bought it at somewhere in 140 zone. Yeah, in this range. So यहाँ से हमने buying शुरू की थी इसको, and it has touched this high 233. So I guess 234, 235 इसने touch किया था, yes. And I'm holding this, so we are already 100 rupees profit, close to 90 rupees profit में हम लोग. And I'm waiting once it breaks this consolidation range. इससे अगर ये 250 टच कर लेते हैं ना, इसका अगले 2 साल के लिए होल्ड करके रख देना इसे. And you will bless me for generations. Keep it for next 5 years. This stock will double from here. 215 या 220 चल रहा है अभी, this will double. ठीक है, but this is not a buy call. I'm just sharing my setup. और setup में होता क्या है, there is a chances, election year है, it may come down to this also. अगर आपने यहाँ पे buy कर लिया, it may come down to this level also. ठीक है, it's a risk. So have your wise decision. And my view can be biased because I'm already holding this stock. ठीक है, so that's a disclaimer which I wanted to share. And one more stock which I wanted to share, which we are in trade, हम लोग इसमें trade में हैं already. Webag, say this. Webag में already it is about, this is again my stock. इसने trend line break कर दिया है. I'll show you. WABAG is the stock name. And in our swing trading pro and lifetime trading for living जो course है हमारा for trading professionals, we teach how to scan and find out these stocks. Okay, so ये देखो, this is about to break this range, and trend line breakout has already happened, and on a daily time frame the stock is getting consolidated, and this is preparing a base on base. base पे base बना रहे हैं. Any stock, as per technical analysis, if it is preparing a base and then moving on, then there are chances that stock will rise further and it will defend its lower levels when it's falling down. Okay, so this is how stock is creating basis on basis. So the stock name is WABAG, WABAG. This is how, and this is again, say if you see this, एक necklace already इसने अभी complete कर लिया है, small necklace, 1 2, it has completed this necklace. Let me show you. ये necklace इसने already complete कर लिया है. So necklace is nothing but ये रहा rounded bottom pattern. But rounded bottom pattern सिर्फ इसको कहते हैं कि ये rounded bottom यहाँ तक ही है. But मेरा necklace क्या कहता है, I have named this my own name. तो ये क्या करता है कि previous high को touch करने जाता है. So that's why these two points are matching each other, and this is a rounded bottom. Rounded bottom और high का fusion बना के we call it a necklace pattern, and I have my design my own stocks to find out such screeners and trade them aggressively. So this is how we trade in necklace pattern and identified stocks. Let me show you one thing. If I have something, did I miss it? Anything? No. So guys, this is again, I'm revisiting those who joined late. This is my website. You can go to courses. Courses में जाके you can register yourself if you are interested. Courses कौन-कौन से? Trading for living, Investing Pro जो investment के लिए है, अपना job, business सब कुछ संभाल के आप कर सकते हो. Swing trading अपना job करके भी आप रात को अगर 1 घंटा study करते हो, you can still have swing trading. And those who are willing to become intraday professionals, you can go for intraday trading for living or F&O courses also. So this is how we are working for financial freedom of our learners. So if you have any questions, any queries, I'm happy to help you. Please ask if you have any questions. कोई सवाल है आपका? प्लीज पूछिए. Okay, there is no question. ठीक है, I hope you found it useful. So let me know. We have a WhatsApp group. Yeah, you can ping me on my WhatsApp number if you need any support.
and I keep sharing my trades also and my live P&L also in group, so that you will come to know we are not just trading for the sake of trading. We are doing live. Okay. So thank you guys. Thank you for joining.